Hey Mayank, thanks for joining in. Can you hear me? Hey, hi Akhilesh. Good morning. I can hear you Hey, thank loud and you, clear. Mayank, and taking your time out. And it is great to have you on board. So we have all our campuses on board, Greater Noida, Bareilly. You can see everybody is dialing in from different AV and rooms. Thank you, Mayank, for accepting the offer to speak to our students. It is your experience is very valuable. Just I will introduce you to my panel members, and then we can kick off with your introduction. So we've got Mansi from Greater Noida. She's our training and placement leader. We've got Darshnil, she's our admission and marketing leader out of Bareilly. And we have got Sunil, who's going to be doing the closing again in training and placement and overall act as our educational consultant out of Greater Noida. With that, I would pass it on to Mansi to introduce Mayank to the audiences. Thank you. Thank you, Akhilesh sir. Let us introduce a prominent leader, Mr. Mayank Gupta, who is heading finance functions at Dekho. He's a qualified chartered accountant and a graduate of Shriram College of Commerce. He's the group CFO of Dekho Grenade Soft, India's leading digital auto tech, financial services, and insurance platform. He has over 20 plus years of experience working at companies such as GE and Maruti Suzuki, and also startups such as Ecom Express and Tata One MG. Mr. Mayank was a part of Fast Track Premier Leadership Program in GE, wherein he worked across the world in various GE businesses and returned back to India as CFO of its businesses in South Asia. Everyone has a will to win, but actually matters is the preparation to win. Now, I would request Mr. Mayank to share his rich and insightful professional journey with us, which would definitely inspire us. Let's hear a digitalized view of Indian car market by Mr. Mayank. Thank you, sir. Please, over to you. News on the call. Great. Thanks. It's a pleasure to be part of this group and sharing my experience and learnings. And thanks Akhilesh, for having me here and inviting me. Uh, so we'll take you through. I'll take you through my journey so far. Maybe good idea. I will first give you a background about our company, Dekho. I think you spoke about my background. Can I share a presentation? Yes, ma'am, definitely. You have sharing rights, so you can, yeah, it is to all participants, you can share it. Yeah. Great. So look, I represent India's largest auto tech company called Dekho. Just quick show of hands, how many have you heard name Dekho before probably announcing this, that somebody from Dekho is coming in? Have you heard this name before in your experience? Just quick show of hands. Yeah, at least few people have heard about it. Oh, many people have heard about it. Okay, great. That's great to see. Thank you. Look, we are, I think as a company, we started our journey 16 years ago, and with very, very humble beginning. At that time, look, internet is more like last 7, 8 years experience or kind of a phenomena in India with geo data coming in, internet costs becoming low, a lot of apps like Facebook, WhatsApp, becoming household names. But maybe 15 years ago, 16 years ago, that was not the case at that point of time, right? Internet was still primitive. It was only, applicable or accessible by like more educated folks or people who can afford very high cost internet. And you need to go to cyber cafe. I still remember those days we need to go to cyber cafe. So, our company started in that era, probably similar time when Flipkart started in 2007-8.
And it started with an idea of when we visited Auto Expo, which is an exhibition which gets done in Delhi, every year and at some point every 2 years. So I think the original need was India is an aspiring country and needs a lot of mobility as a service, and there's no information available digitally for cars. So when we went to Auto Expo and collected the brochures and we came back and checked on internet, there was nothing available digitally. So the team coded and in 1 week got a website up and running called cardekho.com. And within a month, it became a pretty quick hit because it was satisfying a lot of user requirement. And that's where the story started. Fast forward 15, 16 years later today, we are a pretty large group. We have diversified into various businesses. We do have right now a relatively pretty large operations. Our current footprint is roughly 1,400 crores was the last year revenue, and this year we are expecting to be at least 2,000 plus crores. For a relatively new company as a startup, we feel it's a very good achievement, and I think which is like very rare commodity in startup world is we got profitable, and the core DNA coming from a humble background, and I'll take you through a little bit of our founding team background as well. Overall, we use technology as a base, capital allocation as a base, and whichever business we touch. So we move from one business to starting a second business to third business to fourth business. Across the board, we make sure that we become leader as quickly as possible and become profitable in that segment. So quickly, I'll take you through some of the businesses we have done, but here is a kind of quick background about our company. If you may have watched Shark Tank, you may have seen one of our founders is a shark in Indian Shark Tank edition, and he and his brother started, and both of them, I think their father was kind of a very mid to junior level person in a government enterprise in Jaipur, and hence came up with like very, very humble roots, not too much money, basic money just to even get educated in like some average school, but that middle class value system did not stop that ambition. So both of them studied very hard, was lucky at that time to got admission into a good college, but that was a foundation. The vision remained large, and soon dabbled into various startups. Actually, they started 11 ventures, and 10 of them failed, and Dekho became large, and then they shut down others and made Dekho kind of the flagship. And first 5-6 journey was actually satisfying, good growth, profits. I think we were generating 20% profit per year, and by the time we got first funding, professional funding, 5 years later in 2013, we already had almost 20 crores profit sitting in our bank account after paying all the salaries, all the expenses, everything else. In those world, 2013 profitable startup is like, practically impossible commodity to happen in startup world. And that just reflects, and I'll give you a small example. We started, पैसा ही नहीं था बिल्कुल. Okay. तो पुराने लैपटॉप खरीदे क्योंकि नए लैपटॉप के लिए ज्यादा पैसा लग गया तो पुराने लैपटॉप खरीद लिया, उसको अपग्रेड करा लिया, उसमें मेरी प्रोसेसर नया लगा लिया, and that humble kind of a thinking, bootstrap approach, very solid frugality carried us forward, as of today as well. So अगर अभी भी हम जाते हैं ना, कोई भी senior management leader, CEO, anybody come from a company goes anywhere, we all end up sharing the rooms. Number one, we all do not go for the top hotels. We go to mid to even low range hotels as well. Maybe a lot of time Oyo, and even that we try to share as much as possible. मतलब पर पर्सन हमारा 1,000 रुपए, 1,500, 2,000 से ऊपर पर नाइट का खर्चा नहीं रहता अभी भी, typically, unless you go to Mumbai, which is itself a pretty expensive city. And technology, we think, is a big levelizer, and Mayank, sorry to interrupt you, Mayank, that's very different to your G days.
Absolutely, absolutely. You have to transition to the startup world. Startups are all around, maybe 20, 30 years later, you'll be able to afford what a large global corporation could be. But when you're starting up, I'm sure when Thomas Edison started 130, 140 years, he was also very frugal because, you can't create a company if you are, having expenses ahead of your incomes. And technology, is a kind of a core for us. हर चीज हमने ना टेक्नोलॉजी सॉल्व करी है बिकॉज टेक्नोलॉजी ना इफ यू सी मे बी लास्ट 100 year रिवॉल्यूशन तीन सबसे बड़े लेवलर्स आए हैं वर्ल्ड में राइट सबसे पहला द लेबर जब फोर्ड ने गाड़ी निकाला तो एक फैक्ट्री एक ही कुछ ही गाड़ी बना सकता था बट लेबर वाज काइंड ऑफ द बिग लेवरेज इन 1950s 60s द कैपिटल बिकेम अ बिग लेवरेज जो पिछला 30-40 साल से कैपिटल इज फ्यूलिंग लॉट ऑफ ग्लोबल ग्रोथ and for last 15-20 years technology is what is the biggest leverage what is happening and maybe going forward the transition to AI and ML and other advanced stages of technology is the biggest one for us luckily with the technology background that became kind of a I would say key password or a keyword for us to grow the business and what we did actually is make sure everybody play and win together. So there was always a good skin in the game for everybody. There's a very good book around skin in the game. So the real growth or success of a startup works only when there's enough skin on the game of the guys who are actually doing the work. So that's kind of the history what we we want. But I think the key message is with very very humble beginnings. Vision abhi bhi hamara bahut bada hai. We still think it's still not even day one and still lot of things to be done. तो हमारे 4-5 बिजनेस है मैं आपको क्विकली ओवरव्यू देना चाहूंगा कि व्हाट आर द की बिजनेसेस व्हिच वी हैव बिल्ड ओवर पीरियड टाइम ये हमारा पहला बिजनेस है व्हिच इज व्हाट आई स्टार्टेड विद दिस इज आवर ओल्डेस्ट 15-16 ईयर ओल्ड बिजनेस अगर आप किसी भी सर्च प्लेटफॉर्म पे जाएंगे एंड आप कोई सा भी गाड़ी इंडिया में सर्च करेंगे पहला 3 से 5 वेबसाइट में मेजॉरिटी वेबसाइट हमारी है एंड वी ओन मल्टीपल वेबसाइट्स सम वेबसाइट लाइक जिग व्हील्स जो पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट था Bike Dekho, Car Dekho. Power Drift is the #1 auto YouTube channel. So what we do is, we provide independent feedback on the cars. So you can do product discovery, you can do price discovery. किसी भी गाड़ी का किसी भी सिटी में इंडिया में आप ऑन रोड प्राइस निकाल सकते हैं जो कि किसी भी कोई OEM प्रोवाइड नहीं करता बिकॉज हर सिटी का टैक्स इंश्योरेंस वैट सब कुछ अलग है तो so we help in product discovery by comparing reviews by your requirement price discoveries maybe match offers maybe match dealers to you and today we are the #1 platform in the country इंडिया में 80 to 90% जो गाड़ियां बिकती हैं they are getting research on our platform every month 6 crore unique active users come to our platform मतलब इतनी तो गाड़ियां नहीं बिकती इंडिया में साल की 20 लाख गाड़ियां बिकती हैं बट 6 करोड़ एक्टिव यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म में आते हैं हर महीना ऑफ सर्चिंग and hence which we have at a back end enough large dealers we work with every large OEM in the country and practically we work with all the top dealers across every brand in the country तो हमने क्या करा पहले जब ये प्लेटफॉर्म बनाया ना तो काफी हिट हो गया एज आई टोल्ड यू एंड इसमें हम लीडर बन गए फिर हमने बहुत सारे एक्विजिशन करे सिक्वोया का पैसा आया 2013 में फिर what happens is our DNA of keep innovating तो हम डीलर से फीडबैक लेते रहते थे तो डीलर्स ने फीडबैक दिया कि यार हमारा ना फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस स्टिल ब्रोकन है एंड फाइनेंसिंग नॉट फॉर न्यू कार्स बिकॉज न्यू कार्स में फाइनेंसिंग मिलना आसान रहता है बिकॉज इज अ स्टैंडर्ड होमोजीनियस SKU मारुति स्विफ्ट वन मॉडल विल बी वन मॉडल सेम वैल्यूएशन अक्रॉस द वॉइस बिकॉज OEM इज सेलिंग इट बट जो पुराना गाड़ी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन विच सिटी में आप खरीद रहे हैं कितना पुराना गाड़ी है कौन सा मॉडल मेक है क्या उसका कंडीशन है हर एक प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस हो रहा है एंड सिमिलरली इंश्योरेंस में उन्होंने बताया कि यूज गाड़ी का अगर आपने इंश्योरेंस स्किप कर दिया तो उसका दोबारा कराना इट्स अ पेन उस टाइम पे एक महीना लग जाता था कई बार फाइनल इंश्योरेंस कवरेज लेने के लिए कि इंस्पेक्शन पे लेकर जाना पड़ता था कोई आता था फिर वो अप्रूवल के लिए आता था तो व्हाट वी डिड इज वी zeroed in and 3 years after our first funding, around 2016, we started these two businesses, financing and insurance. But पैसे कम थे, तो हमने कहा यार कम पैसों में धंधा कैसे बनाएं?
तो what we started with is we went into distribution business. So we built good distribution business जिसमें अपना पैसा नहीं लगाना. So we became in financing, we became the marketplace. So what we realized कि जो buyer है, जो dealer है और जो bank है, आपस में तीनों का बहुत सारे challenges हैं. Buyer को गाड़ी नहीं मिल पाता क्योंकि उसके पास financing नहीं है और financing approval नहीं मिलता. Dealer एक average इंडिया में 5 से 6 गाड़ियां बेचता है महीने का, उसमें से एक गाड़ी फाइनेंस होता है. तो कोई भी बैंक उसको अप्रूवल नहीं देता इजीली, और अप्रूवल भी देता है तो कहता है यार तू पहले पैसे दे पूरे 100%, पहले मुझे बैंक गारंटी दे 3-4 महीने का, उसके बाद ही मैं उससे बात करूंगा. उसके बाद इतना वर्किंग कैपिटल नहीं होगा. प्लस ही कैन सेल द कार ओनली विद फाइनेंसिंग. एंड लास्टली बैंक्स, बिकॉज छोटे छोटे डीलर्स के पास बैंक्स कांट रीच बिकॉज दे कांट पुट सो मच फ्लीट ऑन स्ट्रीट. तो दैट्स वेयर वी केम इन. हमने एक ऐसा मार्केट प्लेस बनाया जिसमें तीनों पार्टीज अलाइन हो गई. तो बायर कैन गेट, पहले उसका 25% अप्रूवल रेट रहता था, अब बढ़ के हमारे साथ 75% अप्रूवल रेट हो गया. जो पहला लोन मे बी 1 महीना में डिस्बर्स होता था, हमारे साथ वो अब 6-7 दिन में डिस्बर्स होने लगा. डीलर की गाड़ियां बिकने लगी, फाइनेंसिंग पेनिट्रेशन बढ़ गया, और बैंक्स के लिए नया मार्केट खुल गया. This became very popular model, and in fact top 3 banks in the country then invested in us as equity partners. So ICICI, IDFC and Axis Bank are also equity shareholders in our group. So overall अभी अच्छा scale है हमारा. We do annual around $1.1 billion disbursals which goes to us and we pay out to dealers. But हम इसमें कोई भी risk carry नहीं करते. With the core principle at least for us कि हम capital light रखना चाहते हैं और profitable asset बनाना चाहते हैं. And we charge commission on origination. अच्छा खासा हमारा फुटप्रिंट है, ऑलमोस्ट 200 सिटीज, 11,000 पार्टनर्स हैं, 32 हमारे लेंडर्स हैं, फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं. So we are the number 1 used car loan aggregator in the country. Anywhere in the country, अगर आप पुराना गाड़ी पे फाइनेंसिंग ले रहे हैं, अल्टीमेटली वो घूम घाम के हाई चांस है वो हमारे पास आएगा इन सम फॉर्मेट और. ये बिजनेस जब हमने इंडिया में बना लिया, प्रॉफिटेबल हो गया उसको हमने 3-4 साल में. तो what we did is, if you may have heard, lot of startups have gone international, right? Every large startup has started international. But what we did differently is we said कि पहले हम ना होम ग्राउंड में जीतेंगे, उसको प्रॉफिटेबल मॉडल बनाएंगे और वो मॉडल हम रेप्लिकेट करेंगे. तो जब हमने इंडिया में रुपी बिजनेस को बनाया, प्रॉफिटेबल करा, जब प्रॉफिटेबल हो गया, स्टेडी स्टेट प्रॉफिट आ गया, देन वी स्टार्टेड पुटिंग अ फ्लैग इन आउटसाइड वर्ल्ड. तो अब हम साउथ ईस्ट एशिया के नंबर 1 लीडर हैं. एंड इंडोनेशिया इज वेरी बिग मार्केट. इनफैक्ट टॉप 5 कंट्रीज में अगर आप IMF या किसी वर्ल्ड बैंक का किसी का भी आप सर्वे देखेंगे तो टॉप 5 कंट्रीज लार्ज इकोनॉमीज में इंडिया और इंडोनेशिया 2 बड़ी कंट्रीज मानी जाती हैं. तो वी आर लार्जेस्ट इन इंडिया एंड नाउ वी आर द लार्जेस्ट इन इंडोनेशिया एज वेल. तो ऑफ कोर्स फॉर एन इंडियन कंपनी टू गो आउट एंड planting a new flag, it's tough, but what we did is replicated exactly same playbook, and we have seen phenomenal growth in there. We do almost $500 million of GMV loan disbursals in Indonesia today. इंडोनेशिया में सक्सेस आ गया तो हम धीरे धीरे और भी कंट्रीज में प्लान कर रहे हैं, विच इज इन मलेशिया, फिलीपींस, रिसेंटली वी ओपन इन थाईलैंड एज वेल, बट देयर ऑपरेशन आर स्टिल स्लो. सो अगेन सेम लॉजिक. एक तरफ लैंडर्स, तो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में 35 लैंडर पार्टनर्स हैं. एक तरफ एजेंट नेटवर्क, करीबन 4,000 एजेंट नेटवर्क है, एंड वी डू अ मार्केट प्लेस इन बिटवीन. एज ए सेड, इंश्योरेंस हमारा है, हमने दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करा उसके बाद. So we have built a company called Insurance Dekho. Agar if you are reading financial newspapers over last 6 months, 1 year, this company has been in lot of media coverage. Among the funding winter over last 1.5 years, we as Insurance Dekho, we have raised 2 rounds, very large rounds. 200 million हम पैसा उठा चुके हैं एक साल में इस वाले बिजनेस में. And what we do here is, if you see, again same problem in this. So there are end users, there are agents, and then there are insurance companies. Insurance companies, कुछ insurance companies का अपना बहुत बड़ा distribution network है, जैसे LIC के 10-12 लाख agents हैं. But बाकी जो new age companies है, they rely on distributor, some agents in between. But ये जो पूरा system है, पूरा unorganized और broken था. Then came a competitor to us, which is a listed company, and उन्होंने call center model शुरू करा. उनके आप वेबसाइट पे जाइए, नंबर डालिए, एंड यू विल गेट, एंड आई पर्सनली फेस विद इन 24 hours I got 25 calls. So मतलब to me it was like a very very tough
problem to have is how will I buy insurance on a call center model. So what we did is in 2016-17, we innovated this and founded this model of POSP, which is point of sale person. So as of today, we have around 1 lakh agent partners who are registered exclusively with us. They are present in almost 1400, 1500 cities. What we have built, and we have tied up with every single insurance company in India, including LIC, around 46 insurance partners. And we've given this app to our insurance agents. तो वो क्या करते हैं कि दे गो इनटू दे माइक्रो मार्केट्स, और हमने इसके लिए क्या करा ना, बड़े यूनिक चीजें हमने करी। तो 2-3 चीजें हमने इसके अंदर सीखी और उसको हमने इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करा। पहला ये कि इसमें ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एजेंट्स इट वाज टफ फॉर ब्रेकिंग इनटू एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। तो हमने क्या करा, न्यू टू इंश्योरेंस एजेंट्स ढूंढे। वी वेंट एट जिला पंचायत लेवल एंड you know encourage people to get them trained, upskilled, and got them first time as agents. And उसका फायदा क्या हुआ कि हमारा almost 2/3 of our agents are actually first time to insurance. तो उससे ना हमारा attrition नहीं होगा। एंड उनको हमने उनके लिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी कि उनका एक्स्ट्रा इनकम आ गया। कोई महीने के 10-15 हज़ार कमा रहा था, हमारे साथ जुड़ा तो 6,000, 8,000, 10,000 और कमाने लगा। तो उसका इनकम प्रैक्टिकली 60% बढ़ गया और पैसा इमीडिएटली आने लगा, और ट्रेनिंग भी हो गया, अपस्किल भी हो गया, और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो उसको धंधा करना है हमारे प्लेटफॉर्म पे वो हैंडल कर सकता है। इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा हुआ इसका कि एक नया डिजिटाइज प्लेटफॉर्म आ गया जो कि 100% ट्रांसपेरेंट है, कवरेज बढ़ गया। तो इट इज इन लाइन विद गवर्नमेंट मिशन ऑफ इंक्रीजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन द कंट्री एंड ह्यूज टेलमेंट। we have been growing 100% year on year on this. The last thing very different we have done it is we realize insurance is not for selling. Insurance is for claim. Every person who takes insurance वो पहले claim सोचता है कि यार claim मिलेगा नहीं मिलेगा जिस दिन मेरा कुछ दिक्कत आया। तो we invested heavily in the claim side. So we run a 24/7 claim desk and we have the highest NPS. NPS क्या होता है? Net Promoter Score, which is basically कितने लोग आपको recommend करेंगे on the scale of 1 to 10, कितने लोग आपको 9 और 10 बोल रहे हैं। तो we have 93% claims NPS with all our customers the way we operate, which is the highest in the industry. तो ये बिजनेस हमने पिछले 6-7 साल में खड़ा करा है। टुडे इट इज दिस बिजनेस itself will be hitting 1,000 crore plus revenue in just a matter of 7 years and hopefully will be profitable by the year end. लास्ट बिजनेस में जो टच करना चाहता हूँ कि हमने क्या करा, एज आई टोल्ड यू राइट, हमें जो हमारा ओरिजिनल फाउंडिंग टीम था दे गुड इन टेक्नोलॉजी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो एसईओ कहते हैं वो करना आता था, ट्रैफिक जनरेट करना आता था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज भी हमारा ट्रैफिक 90% फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, हम कंटेंट के थ्रू लाते हैं। तो क्योंकि ट्रैफिक करना आता था, व्हाट वी रियलाइज इज एजुकेशन सेक्टर में भी, एंड आप सब एजुकेशन में ही है इस समय, गिवन यू आर इन द एज अ स्टूडेंट। सो व्हाट वी रियलाइज इज कि ये बहुत बड़ा गैप है। तो व्हाट वी बिल्ड इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी posted information on almost 21,000 colleges across the world. तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि instead of applying to 1,000 colleges, 2,000 colleges or even 100 colleges, so we created again similar platform कि colleges को student चाहिए, student को colleges चाहिए, and not everybody can go in the only like limited top colleges, right? उतना किसी के पास शायद पैसा नहीं है, exposure नहीं है, पता ही नहीं है। So again this became a pretty big hit, and again this is also a big growth engine we have created, and this year we are going to hit more than 300 crores revenue in this business. And again, if you see the overall theme in our group is most of the businesses are in line with what as a country we are trying to do. हर एक का एस्पिरेशन है गाड़ी खरीदना, मोबिलिटी करना, हर एक का एस्पिरेशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, इंश्योरेंस और फाइनेंसिंग कराना, हर एक का एस्पिरेशन है एजुकेशन करना। तो इन समरी वी हैव ट्राइड टू बिल्ड बिजनेस which are in line with what I think government needs or the country needs, and doing in a very responsible social manner. So hence we have adopted ESG as well. And lastly, for shareholders and employees, we are making sure we are building a very very good culture for the employees as well as making a profitable organization. So as we speak today, हम parent level पे already profitable हैं, PAT level पे पिछला maybe 2 quarters है, एंड अगला मार्च क्वार्टर तक हम पूरे ग्रुप लेवल पे पैट लेवल प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सो इट्स अ गुड वन।
maybe in 16 years, creating a large platform, 2000 crore plus, and becoming profitable. And with an engine which will continue to grow for next 10 years, at least at a 50% plus growth rate year on year. So that concludes at least the overview of the group. Happy to take any questions on the group or any other thing, and love to chat. Thank you, Mayank. This is a fantastic presentation. It was some of the points I took up that the leveling thing you mentioned about from labor to capital to technology. I think that was phenomenal, and how from a very एक बहुत ही humble background से आपने बताया जयपुर में बहुत ही humble background से आपके founders ने इस बिजनेस को क्रिएट किया बट जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आई कि जैसे आपने बताया बैंक कि प्रॉफिट फोकस रहा ये नहीं कि बस ग्रो कर रहे हैं बट प्रॉफिटेबल ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ पे काफी फोकस किया विद दैट आई मीन आई एम जस्ट गोना ओपन अप टू मानसी और for the fireside session so that you can ask questions from Mayank. Yeah, go ahead. Rajni, please proceed. Yeah. Hi, we sir. can- Thanks for sharing the insights of your business you're working with. So we are entering now into the QA segment of the Fireside. I know people are sitting out there for having so many questions, but I have one question for you. What is that X factor to be a CFO for a startup company? Yeah. So look, I think great question. And for me personally, I had worked majority of my career in very large companies. So to transition to startups is not very easy. So I would say so there are multiple factors. It can't be just one factor. But I would say the number one thing which at least I feel is most important is the agility and the passion to own and do something. Because what happens is once you have started to earn some money, get to, let's say, start as a, executive, assistant manager, as you get up in the life cycle of a corporate, धीरे धीरे हंगर कम होता जाता है and you say okay ठीक है यार और कितना extra effort करना है. Startups में that's not the case because startup you're fighting every single day. Every day you will have 100 things in here and you know what will get dropped. It's like imagining a juggler, right? And you're juggling like start with 2 balls and 3 balls and 4 balls and 5 balls and 10 balls, right? And one ball drops and everything can collapse. So just making sure you get that right balance, and that means it's very intense because if you see BSC 500 in India, on an average of पिछले 10 साल का growth rate is 14.5-15%. Okay, year on year, companies as they grow. Startups, मतलब if it is less than 50% growth year on year, it's not a startup. And startup maybe it's not one startup, right? As you see, हम कम से कम 5-6 धंधे चला रहे हैं. कोई धंधा 100-150% पे ग्रो कर रहा है, कोई धंधा मे बी 20% पे ग्रो कर रहा है, कोई धंधा मे बी 500% पे ग्रो कर रहा है. So you need very different calibration. So that means अगर एवरेज में 100% पकड़ूं, एक नॉर्मल कंपनी 14-15% ग्रो कर रही है, तो एटलीस्ट यू आर ग्रोइंग 7x और 6x एटलीस्ट हायर देन दैट. उतना इंटेंसिटी आना है, उतनी आपको प्रोसेस सेटअप करने हैं, उतना ही टू रन फास्टर. So from a normal job, it's at least 6-7 times X, I would say, more intense. And so unless you are loving what you're doing and be passionate and feeling motivated every day, it's not easy. And you should be having thick skin. बहुत failures आते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि यार कल बचेंगे नहीं बचेंगे, पैसा खत्म हो गया है, कोरोना आया था तो बड़ी कंपनी में फर्क नहीं था, बट स्टार्टअप्स वो बर्निंग, सबके पास 1 महीना 2 महीने का कैश था. And you never know what will happen. So you go through a lot of ups and downs on emotions. But I would say one factor is just passion. कि एक तो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, and in the process, and somebody says is very nice. It's not number of years of experience which matters. It's a number of experience in a year which matters. So startup क्या होता है कि आपको they give you very good amount of experience in a short span of time, and it's up to you. Like you can keep on adding what you want to do. But if you are agile, if you are owner driven, तो एक चीज बड़ा अच्छी चीज रहता है कि and मैं अगर पिछला कंपनी जी का एग्जांपल लूं मैं, तो जी में मिस्टर थॉमस एडिसन फाउंडेड इन 1880s or something, okay, in New York, when we electrified New York City, and then we electrified US, and then we electrified the world, and then we added a lot of segments. Fast forward maybe 130 years later,
There was 13th chairman of the group over like last 130 years. So average 10 साल का एक chairman. So now there's no founder sitting out there, right? So धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा group became, let's say, careerist mentality. ये 9 से 5 काम करना है, थोड़ा ज्यादा कर देंगे, थोड़ा अच्छा रेटिंग आ जाएगा, थोड़ा कम कर लेंगे, कोई बात नहीं, कम रेटिंग आ जाएगा. But that ownership blood gets to miss out. And what happens is when there's no ownership blood, things start to fall off. So startup में क्या होता है कि everybody is an owner because सबको तो ESOPs हैं और और फाउंडर भी साथ में है, और जो फाउंडिंग टीम के आसपास जितने भी कोर CXOs एंड मे बी टॉप 100 एम्प्लॉइज हैं, सबका ओनरशिप मेंटालिटी कि यार मेरा कंपनी है, मेरा धंधा है, मुझे देखना है. And I think that's where the best of any profession comes out. But sir, I felt that like there might some challenges which people face. So do you share a kind of a challenge which you encountered in your career and like how you navigated it through? Yeah, look, life is full of challenges. There's no day you go by like if you don't have at least 5 challenges, right? Because I tell you, not one, hundreds and thousands of examples. To pick up one or two, maybe. So let's say one challenge is always in general is कि यार आपके पास काम ज्यादा है, लोग कम है. Okay, that's a starting point of challenge because क्या आप ज्यादा फास्ट करना चाह रहे हो कि आपके पास गाड़ी है जो कि 100 किलोमीटर भाग सकती है, लेकिन आपको उसको 200-300 किलोमीटर भागना है, तो कैसे भगाओगे? So I would say, look, the way we have looked at it, or challenges is, let me just try to give a more structured answer to it. So challenges could be resources, could be money, and could be a problem statement which you have not yet solved it. Because at least the startup world is based on challenges only, right? Because look, as I started with, right, we started with a challenge कि इंडिया में डिजिटाइजेशन नहीं था चीजों का. तो मेरा जो पिछला स्टार्टअप था 1mg, वो भी उसी तरह से शुरू हुआ था कि इंडिया में अगर आपको डॉक्टर ने लिख कर दी है कि यही दवाई खरीदनी है और वो दवाई 300 रुपए की है, ठीक है ना, बट उसका कोई सब्स्टिट्यूट है जो 50 रुपए में मिल सकता है, आपको पता ही नहीं है कि यार कौन सा सब्स्टिट्यूट है. एंड देयर वाज वेरी ओपेकनेस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन. So in these challenges, if you add technology to this, if you add, I would say, perseverance to this, and put good minds together to come up with solution, that's where the things will come out. तो at least इन दोनों धंधों में मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमने क्या करा कि उसमें हमने उसको खोल दिया सब चीजों को कि हर दवाई में क्या सॉल्ट है, इस सॉल्ट में ये सारी सिमिलर दवाइयां हैं और ये अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो दीज 10 मेडिसिन आर ऑल सेम. जो 50 रुपए का भी है और 300 रुपए का भी आप डिसाइड करिए, हमारे हिसाब से 50 रुपए इज आल्सो गुड इनफ. सो दैट गिव पावर टू द कंज्यूमर दैट इट गोज बैक टू द डॉक्टर कि भाई आपने से 300 रुपए वाला बताया, मैं 50 रुपए वाला दवाई खा सकता हूँ, नहीं खा सकता. सेम इन ऑटो. तो अभी क्या हो गया कि इन्फॉर्मेशन आ गया सबके पास. तो इन्फॉर्मेशन आ गया तो आपको पता है कि गाड़ी खरीदने से पहले कि जितनों ने भी गाड़ी खरीदी आज तक क्या एक्सपीरियंस रहा है, किसका क्या फेलियर रहता है, कंपनी का नहीं कहा कि इतना मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, जो यूज करे उनके हिसाब से कितना मेंटेनेंस कॉस्ट है, कोई नया मॉडल लॉन्च करा है, बट कंपनी का फिलोसफी सेम रहता है. तो इफ यू लुक एट लास्ट 3 मॉडल्स, 4 मॉडल्स, 5 मॉडल्स, फिलोसफी विल कीप कमिंग इन. एंड इंडिया ना नया इंडिया बन रहा है. मतलब आई स्टिल रिमेंबर, मैंने पहला गाड़ी ना अपने पहली जॉब के बाद लिया था, तो आई वाज द फर्स्ट टाइम कार यूजर. एंड आई कैन टेल यू अगला 20-30 साल 50 साल में बहुत सारे लोग पहली बार गाड़ी खरीदेंगे, तो उनको पता ही नहीं है. मतलब आई कैन टेल यू व्हेन आई एंटर द कार फर्स्ट टाइम, मतलब आई डिड नॉट इवन नो कि ये कैसे होता था. And there will be lot of people like that which will come in. अभी क्या है कि जो पहले था इन्फॉर्मेशन नहीं था, अभी that information access is available to everybody. Internet is democratizing information like crazy. Now coming back to at least the core question on the challenges, तो मतलब देखिए इसमें तरीका ये क्या है कि यार आप जीतेंगे और बहुत बार हारेंगे. आइडिया ये है कि अगर if you remain focused on what you're trying to solve for long term and keep coming back motivated next day, that's what matters. बिकॉज दिन में आप 10 चीजें करेंगे, 8 चीजें अच्छी होंगी, 2 चीजें बहुत बेकार होंगी, और पिटाई भी होगी, और आप पिटाई भी करेंगे और पिटाई होगी भी. बट आई थिंक व्हाट मैटर्स इज इफ यू आर लर्निंग द लेसन, ओके, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड एज दे से, राइट, एटलीस्ट आवर टारगेट शुड बी 1% better every day. If you are 1% better every day, at the end of the year, at least a mathematician says you will be 37 times better. चलिए वो तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, but even if you are 2x better that in a year, that's what matters. So slowly, and there's no one magic formula. लाइफ आपको कब क्या चीज थ्रो कर देती है. बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में इतने टॉप एंड पे पहुंच गई थी, इतने बड़े बड़े वैल्यूएशन हो गए थे. नेचर ने कर्व बॉल फेंकी, फंडामेंटल आ गया, पैसा खत्म हो गया, तो सबका वैल्यूएशन 90% टूट गया बहुत सारी कंपनीज का.
So, the people who are just becoming heroes just suddenly became zeros. And now they are starting back again. So, what I feel long term में ना कि अगर आप deserving रहें और always मेरिट आगे रखें और पैसा थोड़ा पीछे रखें. अगर मेरिट पैसा थोड़ा आगे चला जाता है, मेरिट कम रहता है, तो हमेशा दिक्कत है. So if we focus on building skill sets, okay, building good habits, those habits which will compound your efforts, over a period of time, everything else will follow. तो Yeah. मुझे बस ये लगता है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखें बहुत सारी चीजें. एंड स्टार्टअप में हम क्या होता है ना, हमारा स्टाइल ये होता है कि आज के लिए सोचना है, कल के लिए सोचना है. ज्यादा चैलेंज कमिंग फ्रॉम जी, हम तो 10 साल के लिए सोच रहे थे. तो मेरा पहला चैलेंज तो ये होता था कि यार मैं 10 साल के लिए सोच रहा था, यहाँ पे आज के लिए सोच रहे हैं. तो हाउ डू आई बैलेंस इट आउट, हाउ डू आई पुश पीपल कि यार इस महीना इस क्वार्टर के बियॉन्ड भी सोचना शुरू कर दीजिए. And that's a delicate balance. Sometimes you need to solve. So at least my style would be, you should not be spending 90% focus on handling today, okay, and 10% for future. Ideally speaking, it should be maybe 80% for future, 20% for today, but bare minimum should be 50% for today and 50% for future. That's at least what I over a period of time figure out the rule. क्या वो चीजें भी करो जो अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म में फायदा करेंगे, बट वो भी चीजें करनी पड़ेंगी. यू डोंट हैव एनी चॉइस विच आर अर्जेंट टुडे. Yeah, I think the one-liner should be challenges lead us to the growth. That would be the best thing. Like it give you a chances to accept that. So you're working with so many, startups. Like if I'm talking about your leadership skills or something, what would kind of a principle do you follow? And you give an advice to the aspiring leaders sitting in your audience today, like what exactly they should lead their, a team or something when they go for a new future. Yeah. So I would say 2-3 principles generally I try to follow. पहला तो थिंकिंग. एक लीडर का काम होना चाहिए कि यार विजन खोले, कि यार कैन पीपल हेल्प रियलाइज वन, कि मेकिंग श्योर हर एक के अंदर ना कुछ भगवान ने एक स्टैंड दिया है, ओके, और बहुत सारी कमियां भी दी हैं. आप क्या है पूरा जिंदगी निकाल सकते हैं कि उस कमी को पूरा करने के लिए, और आप एक छोटे टाइम में अपनी स्ट्रेंथ को कंपाउंड कर सकते हैं. तो लीडर का पहला काम तो ये होना चाहिए कि यार अपने आसपास के लोगों का स्ट्रेंथ पकड़े और उनका विजन खोले उस स्ट्रेंथ के बेसिस पे. विजन खोलना मतलब कि यार अगर मैं मान लीजिए इस सिटी में बैठा हूँ, मैं रायबरेली में बैठा हूँ, तो विजन ये नहीं कि चलो रायबरेली में बैठ के मैं 10% और बेटर कर लूँ. विजन ये होना चाहिए यार रायबरेली में बैठ के वर्ल्ड का सबसे बढ़िया कंपनी कैसे बना सकता हूँ, अपने एरिया में वर्ल्ड का सबसे बढ़िया प्रोसेस कैसे बना सकता हूँ. तो पहला काम तो वो है कि यार विजन खोले और स्ट्रेंथ्स पे फोकस करके रहे, बिकॉज यार कमियां हम सब में है कुछ ना कुछ. ओके, देयर इज नोबडी, if we don't have any development needs, as we used to call in G, then we will be God. Okay, there's nobody in earth who doesn't have development needs. So and मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ एज एन एग्जांपल कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है. ओके, मतलब I recently have an intern under our team who's currently in SRGC, and he's from a small town somewhere in Siliguri. एंड द फर्स्ट थिंग ये आदमी की सर मुझे ना इंग्लिश कम आती है, मेरे आसपास के हिंदी के मुझे हिंदी ज्यादा आती है. मैंने कहा यार दैट्स योर स्ट्रेंथ, ओके, दैट्स नॉट योर वीकनेस. अगर इंग्लिश नहीं आती डजंट मैटर यार. वर्ल्ड is not, only English will do it, right? India and China maybe has been in last 2000 years have been the largest countries on earth. Okay, so पहला तो हमारा स्ट्रेंथ क्या है उस पर हम फोकस करें वर्सेस हमारी वीकनेस पे फोकस करना. तो एक लीडर का काम ये होना चाहिए. आई वुड से दूसरा, सॉरी, नहीं बोलो मैं पूरी करो अपनी बात. yeah. So I would say that's the first thing to do. दूसरा लीडर का काम होना क्या चाहिए कि यार एक ओनरशिप मेंटालिटी बिल्ड कराना. मीनिंग इफ आई यूज अ सिंपल एनालॉजी इज नॉट फिश एंड गिव इट टू द गाय बट टीच हिम हाउ टू फिश. ओके, मीनिंग एनीबडी कमिंग टू यू, योर जॉब इज फर्स्ट इज टू मेक योरसेल्फ रिडंडेंट. मीनिंग है जो आप कर रहे हैं ना, आपके आसपास जितने लोग हैं उनको वही करना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो करना ही चाहिए. And at least I try to use this principle, and I actually formally declare within my first 3 months of joining here, I will want to make myself redundant. Best case in 1 year, mid case in 2 years, and worst case in 3 years. Okay, that means everybody around me has to be at least equal to me, and I need to move up. And उसका मतलब क्या है कि यार everybody should start thinking यार आपका बॉस क्या मांग रहा है या उसका थिंकिंग है. Okay, every employee in the company should think यार CEO, अगर मैं अपने एरिया का CEO हूँ, मुझे अल्टीमेट अथॉरिटी है, तो व्हाट विल आई डू. एंड दैट मीन्स उससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. अगर एज ए लीडर हम हर चीज में कहेंगे यार तू जो कहेगा तू मेरे से रिव्यू करके आ, एंड देन ओनली वी विल डिसाइड. सो लॉट ऑफ इनसिक्योर लीडर्स डू इट.
बट एनीबडी लाइक हु वांट्स टू बी द राइट लीडर, आप तभी कंपाउंड कर सकते हैं जब आप अपने आसपास लीडर्स बनाएंगे. ओके, तो ये मैं दूसरा चीज बोलूंगा. तीसरा चीज आई वुड से कि एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ लीडर्स जो कि धीरे धीरे काम करना भूल जाते हैं. एंड जी में हमारा एक टर्मिनोलॉजी होता है टाइम ऑन प्रोडक्ट. टाइम ऑन प्रोडक्ट मतलब कि यार कितना रियल आप काम करते हो, कितना मैनेजरियल हो. And what I realize is slowly as you move up to the chain, maybe let's say manager, senior manager, AVP, VP, EVP, SVP, जो भी P's आप लगा लें उनसे, तो क्या होता है, आप धीरे धीरे टाइम ऑन प्रोडक्ट जीरो हो जाता है कि आपको पता ही नहीं ग्राउंड लेवल पे काम कैसे होगा. एंड मोस्ट लीडर्स देन बिकम हाई लेवल कि अच्छा ऐसा भी कर लीजिए. तो एटलीस्ट इन माय व्यू, कोर फिलोसफी ऑफ लीडरशिप इज एवरी सिंगल डे every leader at any level should at least spend minimum 20, 30, 40% into actual doing something. Like, and Elon Musk is a great example, right? वो जिस भी इंडस्ट्री में जाता है वो खुद ही खोल के इंजन कोशिश करता रहता है सीखने के लिए, चलो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं. एंड उससे क्या होता है कि यार पीपल सी अराउंड कि आर यू अ डोमेन एक्सपर्ट और यू आर जस्ट अ पर्सन इन हियर. So leaders who are grounded, who knows the product and enabling teams around it, they are the best combination. Just the last piece I would say is just the humility aspect and the empathy aspect. होता क्या है, धीरे 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 करके आपका ना लिसनिंग ईयर कम हो जाता है और स्पीकिंग ईयर बढ़ जाता है, क्योंकि आप लीडर बन गए हैं. नाउ यू हैव ऑल द लाइसेंस टू स्पीक. So you end up just giving too much gyan and not doing walking the talking and also not getting the signal back. So the number one thing a leader in long term should practice is building empathy. कि यार चुप रहिए. The best leaders are the leaders who speak the least and who generally speak the last. तो listening capability एंड रिमेनिंग हम्बल. ओके, हम्बल मतलब कि यार जैसे आपका सैलरी बढ़ेगा, आई रिमेम्बर मेरा पहला सैलरी में भी 100 रुपये महीना था. ओके, बिकॉज यू आर सी एंड डंस. ओके, एंड वो बढ़ के 1000 रुपये हो गया तीसरे साल में. एंड जब मेरा पहला नौकरी लगा मारुति में, वो 1000 रुपये से बढ़ के 20,000 रुपये हो गया. एंड धीरे धीरे मतलब एवरीबडी इन देयर लाइफ विल कीप ऑन कंपाउंडिंग. तो क्या होता है कि आपके बेसिक नीड्स पूरे होते हैं, फिर आपके पास एक्स्ट्रा आता है. तो लॉट ऑफ पीपल एड अप टू देयर स्टैंडर्ड्स. ओके, कि चलो यार अभी बड़ा गाड़ी ले लेते हैं, अभी ड्राइवर भी रख लेते हैं, अभी एक बड़ा घर ले लेते हैं, अभी एक क्लब मेंबरशिप भी ले लेते हैं, अभी और भी कुछ रख लेते हैं, 4 नौकरी भी रख लेते हैं. व्हाट हैपेंस इज इट कीप्स हिटिंग यू एंड मेक्स यू अ बिगर लीडर इन योर हेड. तो व्हाट आई फाउंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेरा 25 साल का समरी है कि यार the terminology I use are lunchbox mentality. So I still follow a lunchbox mentality. So I don't have an EA. Okay, I don't have a driver. I still follow every single principle, almost what I used to follow 25 years ago. Yeah, keep simple, live life simple, and don't get success in your head. Because most leaders, na, and if you see large companies in India, right, top startups in my space, okay, or maybe as a startup community, वो इसलिए बिगड़ गए क्योंकि वो सक्सेस ना दिमाग में चढ़ गया. तो एज लीडर्स एज यू ग्रो, हर एक के पास कुछ ना कुछ सक्सेस आएगा, किसी का फास्ट, किसी का स्लो. बट लाइफ अगर 40-50 ईयर्स का आप वर्किंग करियर देखेंगे, पहले 40 था, आप धीरे धीरे क्योंकि एवरेज एज बढ़ रहा है तो मे बी 45-50 है, मे बी 10-20 साल में मे बी 55-60 तक भी हो सकता है विद द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी. तो नेवर ब्रिंग सक्सेस इनटू योर हेड इज व्हाट माय जनरली ऑब्जर्वेशन हैज बीन, बिकॉज दैट इज योर स्टार्ट ऑफ योर एंड. So we should just avoid anything hitting your head. I think that sounds impactful for all of them. So I just open sorry. the questions. Yeah. Yeah, just before you open up so I think Mayank, one of the things जो तुमने कही लैंग्वेज के ऊपर, तुमने वो एग्जांपल दिया अपने एक इंटर्न का. हमारे अभी काफी यंगर क्राउड बैठा है आज बरेली ग्रेटर नोएडा में, जिसके भी मन में ये बात आती है कि भाई हम इंग्लिश में, तो हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं अपने कॉलेज में फॉर स्पीकिंग स्किल्स एंड सो ऑन सो फॉर. बट जैसे तुमने कहा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप बता रहे थे अपने इंटर्न को, तो मैं भी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको यही बात रिले करूंगा कि इट डजंट मैटर कि आपको अंग्रेजी बोलनी अच्छी तरह आती है या नहीं आती. व्हाट मैटर्स इज अगर आप हिंदी में भी बोलते हैं तो जो 3 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकुलेशन, कि आप अपनी बात को किस तरह से रखते हैं, 2 स्ट्रक्चर क्या है आपकी लैंग्वेज स्किल्स में, और 3 क्या आप अपनी बात दूसरे को समझा पाते हैं. वो मैटर करता है. लैंग्वेज ओवर द पीरियड टाइम आ जाती है, एंड जैसे अभी ये सेशन भी चल रहा है, हम इसे इंग्लिश में कर रहे हैं, राइट, हिंदी इंग्लिश. तो मेन चीज है कि किस तरह से हम अपनी बात को रख रहे हैं, सीक्वेंसिंग में रख रहे हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं. दूसरी बात, आपने कहा कि लेवलिंग अप, कि ह्यूमिलिटी रखनी है,
और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात मुझे लगी मयंक, आपने बताया कि आप 100 रुपए से स्टार्ट हुए और कैसे 1000 पे पहुंचे, 20,000 पहुंचे, लेकिन ये पूरी जर्नी हार्ड वर्क से हुई, राइट? ये नहीं हुआ कि आप सीधा एक सीएफओ बन गए, राइट? तो कई बार जो हमारे आज की यंगर पॉपुलेशन, उसे लगता है बॉस आज पढ़ाई करी और कल ही मैं सीएफओ बन जाऊं। तो वो एक जर्नी है पूरी, जो आप बता रहे थे मयंक, कि एक पूरी जर्नी है, उसमें सब लर्न करने, हर स्टेज पे आप लर्न करते हैं स्किल्स, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ओपन अप फॉर अदर क्वेश्चंस, सर. राइट, थैंक यू. Yeah, anyone from the AV room, they want to ask something from sir? It's open for you people now. From Greater Noida. There's a very interesting question for you, Mayank. What are the advantages that your company has benefited by having your founder on Shark Tank? Yeah. So, good question. So, look, originally it was my idea. When I joined Dekho 2.5 years ago, Shark Tank was just starting to come in the first season. And I met my founder, and he had a style. Okay, he would have a mixture of. I mean, he was the first guy I found was so comfortable in speaking in Hindi, because he's like pretty desi guy, and he will all the point he'll say, "मैं तेरे को अब हिंदी में समझाता हूँ." Okay, and I realized he has a style, and that humility is huge, and that's where the conceptualization of idea came in. I told him कि यार अमित, let's try. इसे नहीं यार, मुझे सब नहीं आना, ये सब नौटंकी होता है, I don't want to go. एक महीना बाद मैंने फिर दोबारा बोला, मैंने कहा नहीं यार, it's not this thing, it's you will be having a chance of your lifetime to impact crores of people, for them to open up their vision. He said नहीं कुछ नहीं. तो ऐसा 2-3 बार हुआ. Finally चौथी बार के बाद he agreed कि चलो try करो. And then I put my team, and then we got into Shark Tank. Okay. So this is the pre Shark Tank when people saw it. Okay. And then of course उनका selection हुआ. Maybe 140 founders ने interview दिया, and only one guy got selected in that season 2 वाला season, and only Amir got selected. And all because of one, because among the current Shark Tank, he's the only techie. बाकी सब मतलब थोड़ा non-tech के हैं. And he's the only non-metro city guy. He's the only guy from like proper India, which is like a small city. And he's the only guy with very very humble beginning, जिसके कोई पिताजी को बड़ा नहीं थे, बिल्कुल मतलब एक I think Reserve Bank में वो junior accountant थे कुछ. So I think that was a starting point. So he remained himself as a again humble guy, very very depth guy, very techie guy, asked a lot of right questions on unit economics. So I think that image came out. Fast forward, what has happened to us is, one, our brand search has gone up by almost 40%. Okay, because it became an overnight hit, because people started searching, yeah, what is this? कोई नया Shark आया है, what is the CEO Dekho Group? So people started searching Dekho Group. Secondly, the name in general became very very popular. Okay, it's now slowly becoming a household name. I can tell you, when I joined Dekho 2.5 years ago, 60% of my congratulatory message was congrats for joining, name of the company, which was not our company but was a competitor. Okay. And I used to tell them, we are not that, we are Dekho, we are not this other company. Now fast forward, I was chatting and having a light humor with that company. CFO is also a very good friend of mine. We met in some conference, and now I think the reverse is true for them. People joining them, 60% of the congratulatory message are congrats for joining Dekho. Okay. I think that's a big transition which has happened. I think the informal benefits are, it helps you add and relate to employees. Employees join a company and brand which they can relate to. There's a larger investor community. From my point of view, मतलब अगर मैं मोटा नंबर लगाऊं तो एटलीस्ट हमें 100 करोड़ का बेनिफिट हुआ है उससे. 100 करोड़ का मार्केटिंग भी स्पेंड करते तो भी इतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना हम शार्क टैंक में जाने के साथ आ गए. The counter side of it is, of course, we need to keep our head level down. Because क्या होता है ना, with the fame, with the celebrity status comes, of course, things here, are we bigger, are we a god? So I think that remains kind of a one view which we need to watch out for, maybe for years to come. As a company, maybe as our founder, and as well as our because अभी क्या होना, कोई भी जाता है किसी भी हमारे ग्रुप से तो कहता है यार तो शार्क टैंक कंपनी है. But I can tell you, even the portfolios we invested around 18 companies. Okay, meaning the founding team.
तो उनका भी बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है. Their sales normally goes up 3-4x within 1 month of their show airing on Shark Tank. So it's a very powerful group. I would say last thing I would say, and I was chatting with Amit on this because because I originated the idea. So जब आया तो we were just debating once over drinks कि यार what do we feel? And the idea कि यार देखिए पैसा ना आप लाइफ में जो मर्जी कर लीजिए, अगर अच्छा करेंगे ना और अपने स्किल सेट के हिसाब से करेंगे, जिसमें आप अच्छे हैं वही करेंगे, तो मुझे लगता है दुनिया में हर आदमी 8 बिलियन के 8 बिलियन में कोई ना कोई तो हर एक को पैसा कमा लेगा किसी ना किसी फॉर्मेट में. और वो पैसा कितना हुआ, रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट के अलावा, मतलब देयर इज ओनली लिमिटेड थिंग्स यू वुड नीड फॉर, राइट? बियॉन्ड दैट इट एड्स अप टू योर बैंक अकाउंट. बट क्या ना, इज्जत और लाइक लेगेसी बहुत कम लोग कमा पाते हैं. एंड द चांस टू इम्पैक्ट, एंड एटलीस्ट माय व्यू ऑन दैट वाज कि ना, अगर आपने मान लीजिए 1000 लोगों को भी इंडिया में नया बिजनेस बनाने के लिए और प्रॉफिटेबल धंधा चलाने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रेरित कर दिया, एंकरेज कर दिया, देन आई थिंक यू हैव कंट्रीब्यूटेड इनफ फॉर ह्यूमैनिटी. क्योंकि वो 1000 कंपनी जो बनेंगी ना अगला 10 साल में, दैट विल लाइक चेंज द फेस ऑफ द कंट्री. सो नथिंग एल्स, एटलीस्ट आप विजन बोलोगे, नथिंग एल्स यू विल टेल पीपल कि यार इस तरह से भी हो सकता है. So I think that I would say is the larger social purpose. मेरा जॉब तो होता है कि यार आई कीप पुलिंग डाउन कि यार चलो हम बड़े नहीं, हम छोटा ही हम नहीं अभी, लेट्स नॉट स्टार्ट थिंकिंग अ लार्ज कंपनी. No, I Another like that, question. Mayank, when you said तुमने तो पूरी मनोज कुमार की मूवी का नाम ही चेंज कर दिया, रोटी कपड़ा मकान एंड इंटरनेट. Another question from our students, and that's, how is it that you and your colleagues keep on top of market trends? Because you're in a very dynamic business. How are you able to keep on top of market trends? Yeah. So देखिए दो तीन चीजें हैं. One, of course, you have to be domain expert, right? So we need to make sure we continuously sharpening our saw every single time. So meaning making sure that we are talking to our consumers every single day, and we are taking them feedback, like interactive reverse feedback every single day. So one of the biggest thing we do is we track NPS, the Net Promoter Score, for every segment what we operate in. तो क्या होता है, वो हम हर महीने करते हैं हर सेगमेंट के कस्टमर से. एंड कहीं पे भी हमारा मान लीजिए 9-10 से नंबर कम आ गया, वी गो एंड रीच आउट टू देम, क्या व्हाट्स हैपनिंग. द एंटायर मैनेजमेंट टीम रीड्स फीडबैक ऑफ एवरी नेगेटिव फीडबैक ऑफ एवरी कस्टमर कि यार ये क्यों आया फीडबैक, एंड देन दैट इंटेंसिटी ड्राइव्स इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन कि हाउ कैन वी गेट बेटर. So that's on the consumer, because consumer is the biggest guy who will give you the feedback. In addition, the macro feedbacks are happening. That's a job of a, let's say, leadership team. Ki yaar abhi what else happening? Let's say example, electric vehicles aane wale. Okay. So that is changing the landscape, right? Two-wheelers may it's already changed the landscape, right? We expect 20-30%, so two-wheelers already electric move ho chuke hain. And four-wheelers may it's still very small, but maybe next 3 to 5 years, huge shift will happen to electric. So, that's a job of little bit senior team and involvement of all the young people who are joining the company to keep up to the stores. And I would say the last thing is just, never sit on your laurels. Always keep on your, on your toes. Have a phobia built in कि यार what could go wrong. और उससे क्या ना, आपके अपने आप मार्केट में दौड़ते रहते हैं, आप करते गए हैं. एंड ऑफ कोर्स ट्रैक मार्केट शेयर एज वेल. सो वी डू ट्रैक मार्केट शेयर. If you are losing market share, that means you're not doing great. And if you are at least holding and if possible increasing, then of course there is a market factor as well that you are increasing and you're doing on the right track. And of course, by not burning, profitability is like the starting one. Over to Paleri. Yeah, anyone from the conference room want to ask something from sir? Good afternoon, sir. Hi. Sir, my name is Arabia. I'm a BBA student. So my question to you is, how do you encourage employee development in your company? Yeah. Look, great question. I would say, I think the third piece I said, right? The labor, capital, and the technology. I think every technology company, the number one asset and capital is human capital. So that means employees are the number one asset what we trying to drive. So we do couple of things. How do we, drive engagement and, ensuring we build a good culture? One, we have, as kind of a leadership, we have agreed and decided what type of culture we want to build in.
Okay, is it hierarchical? Is it formal? Is it informal? So at least as a company, we build a informal culture as much as possible. Okay, which you feel from day one you enter and you'll feel यार सब कुछ खुला है, सब कुछ कोई किसी से कोई भी बात कर सकता है. Secondly, there's a host of, I would say, structured program which happens, which is one is engagement. Could be, let's say, Diwali celebration, could be Christmas celebration, could be any celebration. Could be ESG celebration ki you go for planting trees or, donating food or, donating blankets in winters and things like that. So there's a huge amount of employee initiative. So we've created some foundation as well. We call it Greener Foundation. I would say the other, देखिए किसी employees के लिए ना, what is the biggest thing, right? That you're entering a job. अगर आप वन एनवायरमेंट कैसा है, आपका मैनेजर कैसा है, आपका टीम कैसा है, राइट? आर यू गेटिंग वेरी एक्साइटिंग रोल? दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज कि अगर कोई दिक्कत आ गया, मैनेजर इज नॉट गुड, shouting, too much intensity, is there any reduction mechanism? Thirdly, कि यार आसपास कुछ extra other than work also is there a engagement? Do you get time to meet leaders? Do you get time to increase your career? Do you have opportunities to training? So in all these aspects, we have tried to create an environment. जैसे कोई employee enter होता है, as an example, उसका एक हफ्ते का induction program है structured. That includes a lot of digital. That includes interaction with almost all leaders. That includes interaction with your actual teams. As you move on, we take 30-day post NPS. So हम NPS लेते रहते हैं. Joining NPS and 30-day later NPS. So we call it ENPS, employee का NPS. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक, मुझे 2.5 साल हो गया, मैंने मे बी 4 या 5 बार सर्वे दे रखा होगा ENPS का. At a start gate, 30 days later, and then annually. तो उससे, और then there are parameters on which you generally give an NPS. तो उससे पता लग जाता है कि यार we as a company are doing good or not. We are doing good. I think that's a starting point. What else we do is to ensure that there are nothing remaining. So we also track Glassdoor. So Glassdoor का जो rating होता है, that is a very very critical rating. तो वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज है वो 4.4 पे है, मोटा मोटा आउट ऑफ 5. ओके, मे बी कोई शायद कंपनी हुआ 4.5 पे. We started a journey maybe 2-3 years ago. We were at 3.8 and we have been tracking. Now we have reached around 4.2. Okay, example. So हम सब 0.2 दूर हैं वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी से. But what happens is if you put a measurement, and as a finance guy I can tell you whatever you measure will get done. So you start measuring here holistically. So what we do is, what we have designed is, हमने ना 7 पॉइंट का एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी पेज बना रहे हैं बोर्ड के लिए. हर बात दिखाते हैं कि हमारे जितने, वन इज माय कस्टमर, वन इज माय मार्केट, वन इज माय एम्प्लॉइज, वन इज माय शेयर होल्डर, वन इज माय कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो whatever you measure will get done. तो हमने एम्प्लॉइज का भी ना इनफ मेजरमेंट दे रखा है. लास्टली हमने क्या कर रखा है कि we get an annual certification of there's an organization called Great Place to Work. So now we got certified to the second year in running. What happens is, they reach out anonymously to all employees or most of the employees in the organization and get independent feedback. Because क्या ना कि HR की तरफ से ईमेल आएगा कि यार बताओ अच्छे हो नहीं हो, तो हर एक एम्प्लॉय को डर लगता है कि यार मैंने बोला नहीं अच्छे हो तो मेरे को ही ना पकड़ ले. So and I'm telling you because मतलब at least I've been an employee for 25 years. I've started from like zero. So as an employee you feel like official आया तो यार you will be careful. But कोई third party आएगा you will be very open. So we try to do both. And honestly, we run a lot of communication. So we run like all management town hall, every quarter. जिसमें हम पूरा कंपनी का फाइनेंशियल, बिजनेस, ऑपरेशंस, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, IPO सब किसी के बारे में अपडेट देते हैं. तो उससे ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है. And then we run a 1 hour Q&A of that. Everybody, every employee in the company can ask any question to anyone. तो ओपन एंडेड रहता था. मेजॉरिटी का आंसर रियल लाइफ पे चले जाते हैं, जो बच जाते हैं उसको हम कंसोलिडेट करके वापस भेज देते हैं आंसर्स. So I think transparency and making sure that we are learning from employees, because क्या ना, at least हमारा approach नहीं है कि we know everything. We are hiring employees because they should tell us कि what we should do differently. नया जनरेशन ना, आप लोगों का जनरेशन बहुत different है than the generation we grew up. And your generation is much more knowledgeable, much more access to information, much more agile than probably a lot of us. So we use employees entering into the company to also keep us agile, to make sure that we do not get into the kind of a habit of know it all kind of a culture. Particularly in finance team, what I do is I try to get a lot of interns into the company. I try to get a lot of fresher CAs into the company, fresher MBAs in the company, and keep asking them, what should we do better? Because हमारे जमाने में क्या होता था ना, I'll tell you my father's time, my age, and what I expect my kids to do. My father age में ना limited job होती थी, government jobs या maybe कुछ अपना छोटा मोटा कर लो.
मेरे टाइम में क्या होता था, when I was growing up, is you are still taught by father, right? Whatever you do, work is God, and your manager is your father. Just focus on it. Freaking don't look anything else, right? Just do one job, and the longest job I worked for is for 15 years. Okay. Today is not that the case. Today, everybody, you need to almost pitch to your employees every single day. You never know, because average, if you see, not in India, global trend post-COVID is average, tenure in a role is shortening. Maybe जो पहले I don't know क्या होता था, maybe 10 साल होता होगा, maybe 8 साल होता होगा, वो घट गया, maybe 2-3 साल रह गए. So you are fighting hard to keep on motivating and encouraging employees, and last point I would say in this is, at the end of the day, जब लड़ाई होता है ना दो companies के बीच में, competition होता है, so there is nothing called company. What is getting fought is employees. The key employees here, they are fighting. And if you have the best talent, the company with the best talent, which is long-term thinker, will win in the long run. So वही company survive कर सकती है जो अच्छा talent attract कर सकता है, motivate कर सकता है और retain कर सकता है. And hence it becomes a super top priority. Yeah, no, I know we are on the top of the hour, and I know there are a lot of questions out there. बहुत सारे questions होंगे. But I just want to say thank you, Mayank. Great words of wisdom, or especially to our student community out there in Greater Noida and Bareilly. आपने सुना मयंक से कि जर्नी क्या होती है, what is the expectation from the younger people. अभी वो बता रहे थे अपने interns की कहानी, लैंग्वेज और बाकी ब्रॉडर की प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, एजिलिटी क्या होता है, ह्यूमिलिटी क्या होता है. बड़े सारे लेसन्स मयंक टीम ने सीखे. आई एम श्योर सब चाह रहे होंगे आपको 1 घंटा और रोकना. लेकिन आई नो you have a busy schedule, and I want to honor the time commitment you have given to us. But that definitely means we will ask you to join us again, and maybe in person, because I think you've got great thoughts, आपके great experiences हैं, and we all, especially our students, will benefit from your wisdom. So with that, I want to. So Sunil, you want to say final words? Yeah. Yes, please. First of all, I think we definitely need a Mayank Gupta part 2. There's still so much that was not covered. And for that, first of all, I must thank you, Akhleshji, for finding such a wonderful guest for this interaction. I know you've been colleagues earlier, but Mayankji, thank you so much for all the insights. We really enjoyed the session. I could have very happily sat for another 2 hours just on the Q&A, because I think the learning has been tremendous. But on behalf of all of us here at the RBMI Group of Institutions, Bareilly and Greater Noida, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mayank. My pleasure. Thank you. Bye. Thank you.